Just now I have started. Wait. Is it uh, is it visible to you now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So in the previous class we have learned the parallelogram definition. Once again recall that. Okay. So properties of parallelogram. Okay. This is it visible to you? What I am showing? Presentation. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. The voice is audible. Is there any Yes, Yes, disturbance? sir. Is the voice audible or any disturbance is there? Hello. no disturbance, sir. No, sir, it is audible. Okay. Sir, audible. Okay. So now let us see here. From the parallelogram, we are going to get the rectangle, rhombus, and square. Means these three are also parallelograms. We know the parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. So ये तो पता है parallelogram के बारे में. Okay. So parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel. Okay. So rectangle is also satisfies the property, and rhombus also satisfies the same property, and square also. Along with that, they are going to have the extra properties. So rectangle is a parallelogram in which one angle is measured is 90 degrees. Coming to the rhombus, rhombus is a parallelogram in which all the sides are equal. Okay. Square is a rectangle with all the sides equal. So a square is a rectangle. So these are the things you have to note. And coming to the properties of the parallelogram, what are the properties? Means the first property is a diagonal of the parallelogram divides it into two congruent triangles. And second one is opposite sides are parallel. And the third one is opposite angles are equal. And the fourth one is diagonals bisect each other. Okay. So these are the four properties. The first one is what? Any one of you read once again the property of the parallelogram. Any one of you, A please. diagonal of a parallelogram A diagonal of a divides parallel. Hmm. congruent triangle. Uh, कट हो रहा है बेटा आवाज ठीक से नहीं आ रहा है A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. diagonal of the parallelogram divides it into two congruent triangles. Okay, very good. Now the second one, if you see that parallelogram, first one, let us see here details. Diagonal b is nothing but this is the line, means non-adjacent vertices. If you join the line, whatever you get, that is called. So the two triangles what you are getting, these two triangles will be congruent. Now you see here one if you place just see the figure. Through the figure you can say that if you cut the parallelogram also like this through the diagonal, the two triangles what you are getting will be congruent. If you place one triangle on the other triangle, both will be coincide. Okay. So this is a property of the parallelogram. And the second one is, first you see the uh, properties, then after we'll go for the proofs. Opposite sides are equal, opposite angles are equal, and diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other is nothing but both diagonals will be bisect each other. Okay. Both bisect each other is nothing but cutting into two equal halves. Okay. So the part Sir, yeah sir, yes. sir, then the opposite triangles it means both the opposite triangles will be equal. You see, remember that It's congruent, sir. Congruent. the terminology what you are using to be should be in a proper way. Yes, these opposite triangles what is shaded here, these two triangles will be congruent. Why they are congruent? By what congruency you can say they are congruent? By what congruency you can say they are congruent? Sir, side angle side. Yes. No, it is showing to you Sir, in the figure. adjacent congruent. Yes, yes. SSS congruency if you are using by SSS congruency, these two are congruent. Okay, so diagonals bisect each other. So from that here, if you see that actually
SAS congruency, whatever you said, through the SAS congruency only these two triangles congruent बोलते हैं. From the proofs, whenever we go for the proofs, we will we'll discuss about it. So properties of the parallelogram, whenever you see that here, rectangle will satisfy all the properties, square will satisfy all that properties, and rhombus also will satisfy all that properties. Apart from the all that properties, these are having some extra properties. समझ में आया? Okay, these are having some extra properties, so this should be you should keep in your mind. Okay, apart from the these, they are going to have the extra properties. So here diagonal ड्रा कर दिया, इसमें भी diagonal bisect both the triangles को congruent करते हैं. So इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है ये तीनों में. एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? opposite sides are equal. Second property, opposite sides are equal. So opposite sides equal in the these three also will satisfy. Opposite angles equal in these three quadrilaterals also. What are the rectangle, square, and okay? The first theorem you see here, this is very important, and diagonal of the parallelogram divide it into two congruent triangles. Okay, so given what is given here, it is given to you that ABCD is a parallelogram and AC is the diagonal. Okay, AC is the diagonal. Okay, and what we have to prove? Triangle ABC and triangle CDA, both the triangles congruent, is nothing but naming the triangle is very important. ABC ADC are not congruent, ABC CDA are congruent. Okay, so proof में ये congruent prove करना है. So in that two triangles, these two angles are equal. Why? Because alternate angles. AB is parallel to BC and AC is the transversal. So when you take a pair of alternate interior angles, angle BAC, in this case, which two parallel lines to be taken into consider? Can anyone say? Sir, in this DC and AB. No. BC AB parallel कैसे होगा? DC, हाँ DC, not BC. I think you हाँ said. सर, DC बोला मैंने, DC और AB बोला. Okay, side. So when you take the DC and AB parallel and AC is a transversal, then देखो वो highlight कर रहे हैं ना, so वो red color में highlight कर रहे हैं, वो transversal है. Then the alternate interior and AC is the common for both. So angle side. By the angle side, one side is equal, two angles are equal. By the angle side, these two triangles you can say that congruent. Very simple here. They are not very complicated here. Okay. So therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA by the ASA congruency rule. समझ में आया? Is it clear to you? So therefore diagonal divides it into two congruent triangles. So the theorem is in a parallelogram opposite sides are equal. Next theorem is what? Opposite sides are, next property. In a parallelogram opposite sides are equal. Okay, so this is second one. Each pair of opposite sides equal in a quadrilateral, then it is a parallelogram. Suppose that is nothing but each pair is nothing but here in the previous here, whenever you see that ये दोनों proofs इसी में से आ जाएगा आपको. ये congruent हो गया तो by the CPCT you can say that AB is equal to CD. By the CPCT you can say that AB equal to CD now. When the triangle ABC is congruent to triangle CDA, whenever you are saying AB is equal to CD, you can say by the CPCT. Therefore opposite side ये दोनों equal बोल सकते हैं, AD equal to BC भी बोल सकते हैं, AD equal to BC. So opposite sides are equal. You can prove that. You can say that opposite sides are equal. Say AD and BC also equal. So CPCT use करके opposite sides equal बोल के prove कर सकते हैं. Okay. एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल भी CPCT है. एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा. एंड इफ यू ड्रॉ द डायगोनल BD,
सेम प्रूफ आ जाएगा आपको, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा. सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यू कैन से दैट, isn't it? So next theorem is that here. तो सर, yes बोलो. सर बोलो. इसमें दो ऑल्टरनेट एंगल्स मींस सर टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं मिलेगा ना, उसमें तो मिलेगा ना सर? बोले तो आप क्या बोले समझ में नहीं आया. सर हम्म. नहीं सर, हेलो. मैंने बोला कि सर टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स तो मिलेगा ना पहले वाले प्रूफ में सर? टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. हाँ, यस 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 यस. हाँ सर, ओके सही. तो दो टाइप का प्रूफ होता है सर इसका? क्या क्या? नहीं सर, तो ऑल्टरनेट एंगल अगर दो पेयर होगा तो ऑपोजिट एंगल नहीं दिखा के भी मैं तीन चीज दिखा पाऊंगा ना सर? मींस फॉर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस. हाँ, यस यू कैन डू इट. ओके. नेक्स्ट सेकंड थ्योरम देखो. इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन ए क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल रहे, पैरेलल के बारे में बात नहीं कर रहे इधर. ये थ्योरम में क्या है, जस्ट बोथ ईयर ए बी इक्वल टू सी डी है, ए डी इक्वल टू बी सी है. ओके. ए बी इक्वल टू सी डी है और बी सी इक्वल टू ए डी है. ओनली दैट इज गिवन टू यू, that's all. So not more than that it is given. Okay. So then what you can yes tell me. सर इससे पहले जो आपने डायग्राम दिखाया था पैरेललोग्राम वाला, हाँ, उस पर तो हम एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी तो सर नहीं यूज कर सकते हैं ना? किधर? ये सर इससे फर्स्ट पहले थ्योरम में, यस सर, फर्स्ट थ्योरम में इसमें यस सर, इस पर तो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी नहीं यूज कर सकते हैं हम. SSS congruency, see here actually SSS congruency भी यूज करके बोल सकते हैं, बट ओरिजिनली क्या है ना, आप SSS congruency यूज करने के लिए क्या करना है, इधर ए बी इक्वल टू सी डी बोलना है. बट ए बी इक्वल टू सी डी हम कब बोलते हैं, एज इट इज अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल बोलते हैं. सो वो बोलने के लिए वो उसको यूज कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली इट इज अ प्रॉपर्टी. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोल, वो प्रॉपर्टी है. सो वो प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज करके भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट दैट मच रॉन्ग हियर. बट एक्चुअली क्या है ना, when we will say that AB and CD are equal, opposite sides are equal, you are saying that yes you can say SSS congruency use करके AB equal to CD sir, BC equal to AD sir, AC is a common sir, so SSS congruency use करता हूँ sir बोल रहे. But here when do we say with the help of this theorem only we will prove that AB equal to CD ना. AB equal to CD हम लोग कैसे प्रूव कर दिया, पहले ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल के ABC एंड CDA ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोल के प्रूव करके, then after we are proving AB and CD are equal. So direct to prove this theorem again AB and CD are equal you are using means it's not up to that correct. समझ में आया? यस सर. आप वो इसी थ्योरम को यूज करके वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं, वो रिजल्ट को ही डायरेक्ट यूज कैसे यूज कर सकते हैं अब. यू एक्चुअली यू नो दैट वेरी वेल. अब ये पूरा सीखने के बाद सारा का पता चलता है, बट बेटर थिंग इज दैट जस्ट बेसिक नॉलेज यूज करके प्रूव करना है ये. ओके. द सेकंड थ्योरम सी, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, then it is a parallelogram. Okay, so what is given here, AB equal to CD given, BC equal to A. Now here draw the AC. Okay, we have to prove what, it is a parallelogram बोल के कैसे प्रूव कर सकते हैं, what to prove parallelogram प्रूव करने के लिए. सर ऑपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल ऑलरेडी दे दिया है ना, ये पैरेललोग्राम बोल के प्रूव करने के लिए तो क्या सर एक डायगोनल ड्रॉ करके उसको ट्रांसवर्सल ले सकते हैं ना सर? क्या प्रूव करना है पूछ रहा हूँ मैं, आई एम आस्किंग व्हाट टू प्रूव, ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं. वो एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है सर. वो पैरेललोग्राम ये बेटा पैरेललोग्राम बोल के प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब. हाँ बोलो. सर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ADC सर.
कॉन्ग्रिएंट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आई एम आस्किंग यू दैट ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, इसको पैरेललोग्राम बोलना है, तो कब बोलते हैं पैरेललोग्राम? अच्छा सर, जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ऑपोजिट इक्वल साइड्स पैरेलल जब होगा सर, इक्वल और पैरेलल जब होगा तभी उसको पैरेललोग्राम ओनली बोल पाएंगे। पैरेलल एनफ, इक्वल दे दिया है, पैरेलल, मैंने क्या बोल रहा हूँ ना, पैरेलल, तो सर सिर्फ इक्वल पैरेलल ऑलरेडी दे दिया। बनने से होगा। पैरेलल प्रूव करना, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करो, बी सी पैरेलल टू ए डी प्रूव करो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम बोल के प्रूव करने के लिए वो प्रूव करना है हमको। हम क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है, बी सी पैरेलल टू ए डी प्रूव करना है। वो प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए इज टेकन। नाउ we know that here it is given that AB equal to CD given, AC equal to, now SSS congruency here use करना है, दे दिया तो तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल्स। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT के अकॉर्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, BAC एंड एयर, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, दैट्स व्हाई ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट ये दोनों अल्टरनेट, ब्लू कलर वाला अल्टरनेट एंगल, सो ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देयर इन द सेम वे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। सो व्हेन यू सी दैट एंगल opposite angles are equal in, this can be proved in another way also, previously what you did इसमें ऐसा प्रूव कर लिया, opposite angles are quadrilateral ABCD है, opposite angles equal, that's why ये पैरेललोग्राम बोल के बोल रहे हैं। अदरवाइज पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर दिस हियर इट इज नॉट प्रूव्ड लाइक दिस, आई विल शो इट टू यू। इसमें क्या दिया है, CPCT BAC इक्वल टू, ओ सॉरी, ये तो समझ में है ना, BAC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। सो देन व्हाट यू कैन से, ये भी पैरेलल टू CD बोल सकते हैं ना, इधर इधर लिख सकते हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल बोले तो द लाइन्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी लिख सकते हैं, इधर इधर नहीं लिखा है इस थ्योरम में, बट इस कैन बी प्रूव्ड लाइक दैट आल्सो, व्हाट आई एम सेइंग। इसमें क्या दिया है, अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूव कर लिया है, बट यू कैन प्रूव हियर इन अनदर वे, आई एम सेइंग। इसमें क्या दे दिया है, उससे एक्स्ट्रा मीन्स बेटर वे आई एम सेइंग टू यू एक्चुअली, ओके। So either directly आप लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी एज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then in the same way you can say that in the same way angle, the other angles, ये ऑरेंज कलर वाला, ये दोनों इक्वल है बोले तो BC पैरेलल टू AD लिखो, so opposite sides are parallel, two pair of opposite sides are parallel, therefore it is parallelogram, वो भी बोल सकते हैं। बट इधर क्या बोला, AC इक्वल टू A इक्वल टू B प्रूव कर रही है, सॉरी A इक्वल टू C प्रूव कर ले, B इक्वल टू D, opposite angles are quadrilateral equal, that's why it is parallelogram, that's it। समझ में आया, ओके। थर्ड सर मुझे ना सर ये वाला सर अच्छे समझ में नहीं आया सर। मैं लिख के समझा देता हूँ एक्चुअली। सर ऐसे ही समझा दो सर, समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम हियर। हाँ नॉर्मली क्या है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर इसमें क्या बोला है पहले, दिस एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, BAC DCA बोथ आर इक्वल बोला है, एंगल BAC DCA बोथ आर इक्वल बोला है। सो ये पार्ट इक्वल टू ये है, ये अपर पार्ट इक्वल टू ये है, दैट मीन्स ये कंप्लीट ये इक्वल टू C है, A equal to C. यस सर। In the same way you can prove that when these two are equal, in the same way B equal to D प्रूव कर सकते हैं। So opposite angles equal हो गया, but मुझे क्या लगता है ना, इससे बेटर सॉल्यूशन आप इधर लिखो, मैं एरो मार्क दिखा रहा हूँ ना, ये इस प्लेस में Sir, your as voice this, is low. oh, now it is okay, is it okay, Yes. is it okay now? यस सर। Yes. Okay, wait for a bit, okay. हाँ,
So इसमें what I'm saying ना, arrow mark I'm showing to you ना, is this arrow mark is visible to you? Here what I'm showing, huh? Sir, This arrow sir, yes, sir, sure. now arrow mark is visible. In this place you can write AB parallel to CD directly. Why? Because these two are alternate angles. Alternate angles equal बोले तो lines are parallel. Oh, yes, sir, yes, sir. If the alternate angles are equal between us. Are parallel. ABCD is a parallelogram. हो गया, समझ में आया? वो ऐसा भी लिख सकते हैं, that is also right. Okay? सर बोलो बेटा. सर बट अगर हमने यहाँ पे एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल? अब एक्चुअली हम लोग पहले थ्योरम में क्या प्रूव कर दिया? पहले थ्योरम में, थ्योरम 1 में diagonals bisect the triangles into two congruent triangles. With the help of that we proved that we have proved that opposite sides are equal, opposite angles are equal. That means opposite angles equal हो रहा है. If opposite angles are equal, in case, okay, if opposite angles are equal, then you can say that it is a parallelogram, isn't it? So यस सर. इधर वही प्रूव कर दिया. पहले थ्योरम में अपोजिट एंगल्स इक्वल बोल के प्रूव कर. दैट मींस अपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहे तो एक्चुअली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, बेटर थिंग इज दैट we have not proved that opposite angles equal होता है तो in any quadrilateral and ये parallelogram बोल के. So that's why you write here the better proof is, in this place you write AB parallel to CD, in this place you write BC parallel to AD. That is a better proof than this one. मेरे हिसाब से. Okay, sir. समझ में आया? So वो कर लीजिए. If you are doing that, then that is the better proof for you when you are giving the proof of the this problem. Opposite sides equal ones. Okay? समझ में आया? यस सर. In your actually textbook में, if you are saying that this is given to you, this theorem is given to you, थ्योरम नंबर क्या दे दिया आपका? मैं टेक्स्ट बुक ओपन कर. डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इज डायगोनल्स ऑफ, हाँ it is not given actually theorem as a theorem. It is not given in your textbook में नहीं दिया. टेक्स्ट बुक में पहले वाला theorem क्या है? 8.1 देखो. You see the 8.1, a diagonal of the parallelogram divides it into two congruent triangles. वो तो prove कर लिया. With the help of that only we proved that opposite sides are equal in a parallelogram. With the help of that second theorem prove कर लिया. 8.2. 8.3 देखो. With the, if each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, हाँ ये 8.3 है. Okay, 8.3 theorem ये है actually. If each pair of opposite sides of a quadrilateral equal, then it is a parallelogram. Okay, both the pairs equal बोले तो then it is a parallelogram बोल के prove करना. So ये proof in your textbook it is not given complete proof to you. Why वो बोल के दे दिया है. Okay, समझ में आया? टेक्स्ट बुक में आप देख लिया तो प्रूफ में वाई बोल के दिया है. बट हियर वाई आई एम नॉट शोइंग. वाई? बिकॉज द रीजन इज गिविंग टू यू हियर इन दिस प्रूफ. सो ये प्रूफ you have to write this proof in your notebook. And see here I am observing that you people are not writing the maintaining the notebook. Once the school may call all the students to the school, then if the government has given completely, then you need to show the your notes compulsorily. Do remember that. Okay, notes में लिखो ये theorem लिखो, first theorem and second theorem. With the first theorem we have proved the two results, opposite sides equal, opposite angles equal. सेकेंड थ्योरम में थोड़ा चेंज कर लीजिए. मेरे हिसाब से आप लोग क्या करना है ना, इधर ए बी पैरेलल टू सी डी लिखो, इधर बी सी पैरेलल टू ए डी लिखो, इधर. ओके, इधर ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू. सो opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel is nothing but it is a parallelogram. That's all. Okay,
The next one is diagonal of the quadrilateral bisect each other. Diagonals bisect means एक diagonal दूसरा diagonal को bisect करेगा. ओके ये प्रूव करने के लिए आपको SAS यूज करना पड़ता है. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इन AEB, okay, in triangle AEB and CED, okay, these two triangles में AE equal to C, a quadrilateral ABCD in which diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Diagonals bisecting बोल के दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है. देन इट इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव करना है. ओके ओके so here AE equal to angle A, these two are, why they are two, these two angles are equal. Here what is angles shown to you? So Can you vertically say? opposite angle. Yes, very good. Vertically opposite angles. These two are equal. Okay. Then next after BD equal to, sorry, BE equal to ED. Or you can BE equal to ED. Okay. So it is given. That is also given to you. So by SAS congruency, you can say that the triangle AEB and CED are congruent. By what congruency? SAS congruency. SAS. A ये highlight कर रहे हैं ना, ये AEB and CED. These two triangles are congruent. Okay. Clear है? So therefore congruent by the CPCT, you can say that ABE angle equal to CDE. Therefore you can say that AB is parallel to CD. यही मैंने previous theorem में भी बोला है. When the two angles are equal, parallel, and AB equal to CD by the CPCT. AB CD equal है, ये दोनों ही equal है. So therefore you can say that it is a parallelogram. ये तीन theorems very important है. These three theorems you try to write in your notebook. Okay. Then after we will move to the exercise problems based on this. So next you are having the midpoint theorem, then we will learn it later after completion of the next exercise. Next exercise complete होने के बाद सीख लेंगे. Okay. Okay. So ये theorems, whatever the theorems now we have discussed the three theorems, इसका proofs compulsory notes में लिख दीजिए. The proofs whatever I showed you. Okay.